previous night a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay.
Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimugyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the two DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan Army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian Army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have just one line, no multiple questions, please. Sir. All right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation, can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about
the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented. And of course, later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course, there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said, 147, start please. Hi sir, good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Military targets, after response. Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan Army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan Army or its special forces and commandos is difficult to say,
but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said. I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. Their fighters, the more numbers of UCAVs, it is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anuvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers
we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they four generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर, मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार, मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? सर, बिफोर यू आंसर, सर, बिफोर यू Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम, सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस
उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा. So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have one or two more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. I think. Yeah, ask sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. I'm waiting for this to look. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is, have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर. मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जाज रुलाएंगे. तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी. हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की. लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी. तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं. हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है. उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है. आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं. तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं. हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है. सर, मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, 1 मिनट. जो
हम जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा. So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay. Now, as per the please, we'll have 166 and 25, and after that, no more, please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain. I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only two questions left. 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, you know, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you know, you've got the three Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. You know, I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. You know, that's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25, she has been she's been asking since the first one. Sir, I'm Nandita. Sir. She's not asking a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number two, yesterday at the joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull, of course, but if tonight again, if the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response, and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO.
I wouldn't be able to, give you that. But, in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. But without, getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak. All right. Ladies and gentlemen, please, ma'am, please. Okay, thank you so much for coming today. Those who have missed asking a question, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I'll definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. तो ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत लंबी और डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे थे तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल्स की, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस, नेवी ऑप्स देखते हैं, और बहुत साफ साफ सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया, पहली रात से लेकर के कल रात तक क्या क्या हुआ है, और साफ साफ जवाब दे दिया गया है कि अभी जो स्थिति है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कोई समझौता नहीं है, केवल कल 12 बजे तक के लिए फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशनों पर रोक लगा दी गई है। और आज के लिए सख्त चेतावनी भी पाकिस्तान को दे दी गई है कि भारतीय सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है फियर्स एंड प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि आज रात अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार तीनों सेनाएं मिलकर जवाब देंगी। आज रात अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो एक करारा जवाब मिलेगा, तीनों सेनाएं मिलकर एक बड़ा जवाब देंगी। जो कि नेवी के जो आए थे उन्होंने बताया कि मैसिव ब्लो दिया जाएगा पाकिस्तान में। एलओसी पर की तरफ उनकी सेना के 35 से 40 जवान जो हैं पाकिस्तानी सेना के वो मारे गए हैं, ये भी जानकारी दी गई है आर्मी की तरफ से। और ये भी बताया गया है कि उनके कई जहाज भी गिराए गए हैं, उनके कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो शूट डाउन किए गए हैं, लेकिन कितने कौन से इसके बारे में ये कहा गया कि उसकी और डिटेल्स आ रही, क्योंकि उनका मलबा हमारी तरफ नहीं गिरा, क्योंकि किसी के जहाज ने एक दूसरे की सीमाओं में जाकर के हमला नहीं किया है, लेकिन उनके जहाज गिरे हैं और उसकी जानकारी जो है इकट्ठा और की जा रही है और वो दी जाएगी। तो ये भी बड़ी बात है। तो बिल्कुल, और सीधे सीधे ये भी कहा कि टेरर कैंप पर किस तरह से कार्रवाई की गई, अगर पाक ने आज कुछ किया तो तीनों सेनाएं मिलकर जवाब देंगी। और जिस तरह से जब डीजी नेवी जब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से नेवी से कई मायनों में हम बहुत आगे हैं, और अगर अब कुछ हिमाकत की तो जो जवाब होगा वो पाकिस्तान याद रखेगा। कई एयरबेसेस जो हैं पाकिस्तान की, उन पर हमारी मिसाइलों ने तबाही मचाई है जाकर के, उसके सबूत वीडियोस और पिक्चर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए डिटेल में उसके बारे में बताया गया। और ये भी कहा गया कि भारतीय सेना को फ्री हैंड है, आर्मी चीफ ने आर्मी कमांडरों को फ्री हैंड दिया है और प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों सेनाओं को बिल्कुल आजादी है कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, परिस्थिति उत्पन्न जैसी होती है। और साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उसने कल सीजफायर का उल्लंघन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जैसे एक्सपेक्टेड था कुछ अलग नहीं किया उसने, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे का प्लान पूरी तरह से तैयार है, कल की बातचीत में यह तय होगा कि आज पाकिस्तान किस तरह की हरकत करता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी है इसकी लॉन्गेविटी यानी कि कब तक चलेगी, उसकी मोडालिटीज किन शर्तों पर चलेगी, वो कल तय होंगी। लेकिन आज की रात पाकिस्तान क्या करता है, कैसे करता है, सब कुछ इस पे निर्भर करेगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण और शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सबके मन में ये जिज्ञासा थी कि आखिर हमने कितना नुकसान किया तो हमने क्यों अपनी तरफ से जो है ये पाकिस्तान को सजा देना रोक दिया, इसके बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पाकिस्तान ने फोन किया, सीज फायर पाकिस्तान चाहता था। कल सुबह 10 बजे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, भारत के डीजीएमओ ने बात नहीं की, वो सीज फायर चाह रहे थे कल सुबह से,
और उसके बाद 3:35 पर बात हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत से सीज फायर रिक्वेस्ट की कि भारत अपने हमले रोक दे, और उस बातचीत में ये तय हुआ कि फिलहाल उन्होंने कहा बिल्कुल, और सौरभ जिस तरह से सबूत रखे हैं, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान किसी भी तरह से आगे ना निकले, तो सबूत के साथ बताया है कहां मारा, कैसे मारा और कितना प्रिसाइज मारा, और किस तरह से टेरर कैंप में भी वही लोकेशन पिन पॉइंट करके मारा जहां पर आतंकी या फिर उनका एम्युनिशन बेस था। तो ये मुरीदके की तस्वीर सबसे पहले है जो दिखाई गई है, और मुरीदके को टारगेट डाउन करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास थी, मुरीदके और साथ में भावलपुर। तो पहले मुरीदके की तस्वीर है सौरभ। जी हां, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, तीनों सेनाओं ने बताया, वो तो हमने पहली रात को ही पूरा कर लिया था, जब हमने आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके हेडक्वार्टर्स और ठिकानों पर वार किया था। मुरीदके मतलब लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और जितने उसके आतंकवादी हैं, उनके कैंप पर हमला किया गया। सैटेलाइट पिक्चर ने डिटेल बता दी है, पहले कैसा दिखता था, बाद में कैसा दिख रहा है। तस्वीर में आपको भी स्पष्ट ये देखिए, बम गिरता हुआ मुरीदके के लश्कर तैयबा के कैंप पर बम ड्रॉप होता हुआ, बम ड्रॉप गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो भारत ने जो कार्रवाई की उसको 100% पूर्णता के साथ हमने कंप्लीट किया, हासिल किया, और उसके सबूत भी जमा किए, इकट्ठा किए, दुनिया को दिखाने के लिए। मुरीदके में 4 पॉइंट, जो पूरा का पूरा कई एकड़ में फैला हुआ मुरीदके का जो आतंकी कैंप है, उसके 4 पॉइंट जो हैं आइडेंटिफाई किए गए थे। फिर उन 4 पॉइंट को आपको तस्वीरों में सौरभ दिखाएंगे कि उन 4 पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से मिसाइल जो है दागी गई, और आपको 4 पॉइंट्स पे अलग अलग जो आर्म है, जो एम्युनिशन है, वो ड्रॉप डाउन होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर उन 4 अलग अलग पॉइंट्स की दिखेगी सौरभ। जी हां, बिल्कुल, ये देखें आप, मुरीदके के टारगेट्स पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें, इंपैक्ट की तस्वीरें जो हैं वो आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी कि कहां कहां पर हमने हमला किया। ये देखिए, ये जो टारगेट था उसमें दिखाया गया है, ये था लक्ष्य जहां इस कॉम्प्लेक्स पर, इस बिल्डिंग पर बम गिराना, वो आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ऊपर से नजर आ रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज्ड है, उसकी रूफ जो है वो पूरी तरीके से गिरी हुई है। ये देखिए आप, ये जो बिल्डिंग की इमारत की जो छत है पूरी तरीके से नीचे गिरी हुई है, और ये सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि पहले ये बिल्कुल इंटैक्ट था, इसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया गया है, और उसमें आपको यहां मचा हुआ जो इसका नुकसान है, जो इसको पहुंचा है, वो इसमें साफ आपको दिखाई दे रहा है। मुरीदके मतलब लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और उसके ठिकानों पर जाकर के ये तो मुरीदके के पूरे कई एकड़ फैले हुए, जो पूरा का पूरा ये पूरी बैरिकेडिंग हुई है, कई एकड़ में फैला हुआ ये पूरा का पूरा टेरर कैंप था। तो उसमें 4 आपने पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किए हैं, 4 इंपैक्ट पॉइंट बनाए गए, फिर 4 अलग अलग एमिनेशन जो है ड्रॉप डाउन किया गया। ये देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, यहां पर बाकायदा सेना ने दिखाया कि 1, 2, 3, 4 पॉइंट थे, उनकी पहले की तस्वीर दिखाई, और फिर उसके बाद अटैक पे जब आर्म ड्रॉप डाउन होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है उसका, वो उन 3 पॉइंट्स की तस्वीर भी रिलीज की है। तो सबूत दिए हैं कि स्थिति क्या है। इसके बाद भावलपुर का टेरर कैंप, भावलपुर मतलब जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, और इस स्ट्राइक में साफ बताया गया कि मौलाना मसूद अजहर का जो भाई है मोहम्मद यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ अजहर, वो मारा गया है, और ये जो है उसका भाई भी है, और साथ साथ IC 814 हाईजैकिंग में भी इसका हाथ था। डेनियल पर्ल, वॉशिंगटन पोस्ट के जो पत्रकार थे, उनकी गला काटकर हत्या की गई थी, वो इसमें शामिल था, वो मारा गया है। और इसके टेरर कैंप को जो नुकसान पहुंचा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है बहावलपुर में, इसमें कई इमारतें हैं। बताया गया कि उनको टारगेटेडली, जहां हमें पता था कि यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, यहां आतंकवादी हैं, वहां पर जो है वो हमला किया गया। और ये कॉम्प्लेक्स था, ये जो आप पहले देख रहे हैं ऐसा दिखता था, बाद में इसको आप देखेंगे इसकी छत जो है गिरी हुई है। ये बहावलपुर में खास तौर पर पिन पॉइंटेड एक बहुत इमारतों का एक क्लस्टर है, उसमें किस जगह हमला करना है वो प्रिसाइज इंटेलिजेंस थी। इसको आप देखिए, ये सारा इसका जो ऊपर से नजर आ रहा है छत जो है पूरी तरीके से गिरी हुई है। ये है जहां पर बॉम्ब ने इंपैक्ट किया, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो इसमें साफ दिखता है कि जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल अपने निशाने पर पहुंच करके उसने अपना काम किया, और यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बहावलपुर में। जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकायदा तस्वीरें रिलीज की गई हैं, सैटेलाइट इमेजेस किस तरह से अटैक की रिलीज की गई हैं भावलपुर में, 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके, और हमारे दर्शक ये रेड कैनोपी से उसको थोड़ा और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लाल रंग की कैनोपी जो लगी हुई है उसके पास आपको नजर आएगा कि पहले तस्वीर कैसी थी और उसके बाद नीचे बिल्कुल समतल जमीन हो गई है। तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। इस हिस्से को आप देखिए, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वो बिफोर आफ्टर पिक्चर में बड़ा क्लियर है।
तो यहां पर सबूत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तो हमने किस तरह से कितना प्रिसाइज अटैक किया है और कैलकुलेटिव और मेजर्ड अटैक किया है, उसकी तस्वीरें सामने हैं। कॉमोडोर सिंह, यहां पर साफ साफ अब दुनिया को भी बता दिया हमने कि देखिए पूरा इतना एकड़ का कॉम्प्लेक्स था, हमने किसी भी तरह से कोलैटरल डैमेज नहीं की, हमारे पास इतना सही इनपुट था कि उस पूरे कई सौ एकड़ में फैले हुए कॉम्प्लेक्स में हमने 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए जहां पे हमें पता था टेररिस्ट मौजूद हैं, हमने सिर्फ उसी को डैमेज किया। बिल्कुल प्रनाश जी, आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज तो बहुत साफ आ गई है, ये एक तरह का रीइटरेशन था ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अभी तक हुआ है। हमारी हर शाम की ब्रीफिंग में ये हमें पता चल चुका है, ऑलमोस्ट 90% चीजें हमें मालूम थी, लेकिन इस बार बहुत ही क्रोनोलॉजिकली उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया, उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया, उसका वाई भी बताया। अभी तक हमको पता चल रहा था कि हाउ, व्हेन, व्हाट, क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन अब क्यों हुआ है वो भी बताया गया। इंटेलिजेंस सब बिल्कुल थी हमारे पास, इसलिए प्रिसीजन हमें पता था कहाँ अटैक करना है, और हमारे वेपन सिस्टम्स की काबिल तारीफ करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स हमारे जिन लोगों ने ऑपरेट किया है, द मैन बिहाइंड द मशीन, जैसे ईवीएम सर ने बताया था, सर ने बताया था, मार्शल तिवारी ने, तो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड डिस्ट्रक्शन की थी, जिसको हम कह रहे हैं मेजर्ड, कैलिब्रेटेड और फोकस्ड हमारा अप्रोच रहा, और उसी का नतीजा एयर वाइस मार्शल भारती ने एकदम एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाया, सारे स्ट्राइक्स जहां हुए हैं उसको एक एक उन्होंने क्लियरली समझाया कैसे हुआ है। और पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि काफी एयर बेसेस ऑन आवर फॉरवर्ड पोजीशंस एंड ऑन आवर सिविलियन टारगेट्स। दिस वाज टाइम टू कन्वे सम मैसेज टू आवर एडवर्सरीज, एंड देयरफॉर अ डिसीजन वाज टेकन to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sucker, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce RT engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the
night of 7th and 8th, what we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as